Thank you very much. Biz rukni वफद मेरे बराए ईरान कि बाहम B2B जलसे में कोने वाही कार सहलबाशी. Yeah, it is so good suggestion for us, and I'm trying very hardly to make an arrangement in Iran with the related industry you want. Inshallah, in the March, you travel to Iran and manage this to have a very good session with the Iranian side and have a bilateral. I start from here. I come back to embassy. I started to this to arrange this, inshallah, for you, inshallah. Only I explained to Mr. Kazemi that please write a letter for me for embassy of the Iran and say and write which industry you need to have a meeting. And it mentioned to your plan to Iran and date and which Chamber of Commerce you need to have a meeting with them. Please write this and send me. You can send me by WhatsApp or by Mr. Kazemi. I give this letter, and after that, I coordinate with Tehran, inshallah, Tehran or Mashhad, every city you want. Every city you want. I manage this with Chamber of Commerce at this city, that city you want. Inshallah, have a good outcome from this meeting. Inshallah. Thank you very much. सलमान साहब सवाल करना चाह रहे हैं. जी अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum. मैं ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि मैं भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ और मैं फैंसी बेडशीट्स जो ब्राइडल के तौर पे यूज़ होती हैं मैं वो बनाता हूँ. उसका क्या स्कोप है और उसका क्या मार्जिन, ये पूछना चाह रहा था. और काज़मी साहब ने तो हमें डिटेल से अभी बताया भी है, तो उसके लिए भी हम B2B मीटिंग्स अरेंज करेंगे. तो उसके लिए जो उनसे है वो काज़मी साहब ट्रांसलेट कर दें. तो उसका क्या स्कोप है इसका? बराए صنعت نساجی. तख्ता पोश ये साजमी को ने तख्ता पोश خب निखाए के हिमायत लाबिदे के चेक का गुजारिश असदार ईरान के तख्ता पोश मुझे यानी सादर में تخته پوش اینو पोश It's a home textile actually. برای مبل منظورتونه؟ برای خوابگاه تختا پوش. آن تخت میخواد؟ نه تخت پوشک. بله بله پوشک. I should say Iran has industry in this in this point and is in the bed for bed, but I should ask them. I don't know really. I don't have a statistic from this, but in textile for clothes, yeah, for clothes it's so easy, and we have a capacity for clothes, and some of the parche رو چی میگید آقای چیز؟ پارچه برای پارچه لباس پارچه لباس بهشون بگید پارچه لباس. میدونیم پارچه، منظورم پارچه است. कह रहे हैं कि कपड़ों की जो है ना वहाँ पे बहुत गुंजाइश है. मैं ऑलरेडी Yes, well, Yeah. also falls into textile sector. लेडीज की ज्यादा डिमांड है. And another thing is Korea और China से लोग so लाते हैं. need in Iran is chador, black chador. ये सारा Yeah. कपड़ा चाइना से It is so कोरिया से neat, and Iran import this fabric from the other countries. If you have a capacity, you can use. You can yes. In charge, each other is so useful for Iranian women. And unfortunately, most of this fabric material come other countries, especially Korean countries. Yes. Yeah. Yeah. This is a good. Yeah. من پیشنهاد دادم الان مشکل این برادران تاجر این هست که چه جوری پول حواله میکنه.
मन पेश नहाद आदम कि अगर हर कसी मुश्किल दार मन मुश्किल हल Yeah, in transaction, in money transaction, also I mentioned we don't have any banking transaction between two countries, but some of the businessmen like Mr. Kazemi is ready to help you, and Mr. Kazemi is one of the good businessmen between Iran and Pakistan, and have a lot of rice export. Rice export from the Pakistan to Iran. Have a good experience in a how do you business with Iran. You can every person who wanted to start to business and trade with Iran ask the help from the Mr. Kazemi. I said there are some problem in the Iran in trading between two countries. Yeah. Thank you very much. यानी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है ईरान के लिए कोई मालूमात चाहिए मैं इनका Mr. Ahmad, yes. I think it's better you're thinking about the agreement or memorandum of understanding between your Chamber of Commerce and one of the Iran city Chamber of Commerce. Yeah. You thinking about this, and if you want to have an agreement between two Chamber of Commerce, inform me. Yes. We'll work for it as well. Yeah. ये इसके लिए रास्ते में भी इनसे डिस्कशन हुई है और ये बहुत बड़ा इक़दाम है। कराची चैम्बर, लाहौर चैम्बर, इस्लामाबाद चैम्बर अभी तक किसी ने इस तरह की कोई पेशनहाद नहीं दी जो आज अभी ये आपको दे रहे हैं। यानी तेहरान चैम्बर और गुजरांवाला चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक म्यूचुअल आपस में ब्रदरली MOU कि यहाँ के मेंबर वहाँ के एजाज़ी मेंबर तस्वर हो और वहाँ के एजाज़ी मेंबर यहाँ के एजाज़ी मेंबर और ये आपस में बाई लेटर अगर ये लेटर देंगे मैं अभी 25 को जा रहा हूँ we'll be going towards all three avenues. We'll be arranging the delegation, we'll be having the expo, and this idea is great. We're already working for an MOU with the Colombo Chamber of Commerce and Industry. So this, I hope this could be the first one that we sign. We'll work towards it. Thank you. मुतफिक हस्त के बहम तेहरान चैम्बर तेहरान व बादरगानी गुजरवाला बहम ये करारदाद देना भी से इंशाल्लाह। Thank you very much. Ali Hawalwar, if you want to talk about the scrap and the metal industry. We just want to know if is it any possibility that we can import the scrap from Iran and stuff like that, because it is coming to Pakistan but from other channels, not from the legal channels. Is it any possibility? Yeah, there are some businessmen who do this. And this iron transaction. And they have, yes, I know some of the businessmen, yes, do this. And it's okay, you can go to Tehran. Tehran is the center of this industry. Okay. Yeah, you can do this. But I don't know what is the tariff. Yeah. Please, everything, if you want to enter to every industry, you check the tariff between two countries. Yeah, unfortunately, some of the industry is high tariff, but I think it's not so high. Tariff is not a big problem. The problem is that is there any sanctions that we can import from Tehran, or it's easier for us? Ask Mr. Kazemi. He help you to resolve this problem. Yeah. Okay. Yeah, I think if we import scrap and we can barter trade, we can re-export household metal parts and other things that we can re-export copper with the remat. There is a scope. We can discuss with you later, and we will see what we can do. Mr. Imran, please. एक सवाल है, ये जो बार्टर ट्रेड है इसकी मेन प्रॉब्लम बैंकिंग ट्रांजैक्शन ना होना, वो हमारी गवर्नमेंट की सुस्ती है, कमजोरी है। उस पर हमें पहले थोड़ी सी वर्किंग करके अपनी गवर्नमेंट को इस बात पर ट्राई करें कि ईरान के साथ बैंकिंग लेन देन जो है ना वो प्रॉपर हो, जिस तरह इंडिया का है और दूसरे मुल्कों को जाता है। हम हमसाया होने के बावजूद हमें इजाज़त नहीं दी जाती। इस पर चैम्बर
हमारा फेडरेशन लेवल पर इस बात को उठाए। इसकी वजह से हमारी जितनी भी ट्रेड है जो मजबूरी के तौर पर हम बॉर्डर के लोगों के जरिए करते हैं, उसमें हम नुकसान उठाते हैं। उसमें ईरान गवर्नमेंट 4 कदम हमसे आगे है। पहले हम इस चीज़ के ऊपर आए, अगर ईरान से ट्रेड करनी है तो पहले बैंकिंग ट्रांजैक्शन वाया दुबई, वाया अराब, वाया अजरबैजान, ये चीज़ें गवर्नमेंट से हम खुद पहले ये चीज़ें क्लियर करवाएं, तो फिर ये जितने मसाइल हमारे साथी बयान कर रहे हैं ना, इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सुस्ती हमारी तरफ से है। और जो मेरा इनसे सवाल है वो ये है कि ईरानी एम्बेसी क्या हमारे ताजर बरादरी को सहूलत दे सकती है? मसलन ईरानी इम्पोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स की लिस्ट क्या इनसे मिल सकती है? मसलन इनका कोई डिपार्टमेंट है एम्बेसी में? अच्छा, वो पहला पार्ट है उसके तो रहने दे, वो रहने हमारी कंसर्न है। दूसरे का अपन जवाब है उम्मीद है कि अगर मन के अक्षमा पुरसीदम दिरोज बस पर कि लिस्ट है तो जारे ईरानी शिरकत है ईरानी की मुझे कार में को नहीं हुआ, वारद भी को नहीं हुआ, सादर भी को नहीं, वो लिस्ट अगर लुत्फन تهیه بشه. چاپ باشه یا بذاری پس اینو به I should better to say Persian to Mr. You know, I try to say English and Mr. Kazemi say to Urdu. You asked me to give you a list of the businessman, Iranian businessman to you. I should say yes, there is. There is a list of this, but I should ask from the Chamber of Commerce to give us. But unfortunately, because of the sanction of the United States, we cannot give this list to the public. You know, United States started to sanction the person of the Iran, the businessman of the Iran, unfortunately. And because of this, most of the businessmen don't say and don't register your name. Because of this. Also, if you want every industry businessman, I can introduce yourself. It's easy for me. I started to make a bilateral connection between you and every person you want. But I think I asked the Chamber of Commerce in Tehran, if is it ready, I publish it and send it to the Mr. Muhammad. But I think it's not available at now because of the sanction. थैंक यू। आप समय डालिए, ठीक है, वो इंशाल्लाह हमें भेज देंगे, फिर हम उसका शेयर कर लेंगे। वालिद नकवी साहब अपना सवाल करें और फिर हम आगे की तरफ जा रहे हैं। Thank you very much, Mr. President, for giving me the opportunity. I would also like to thank Khanam Zahra Qadianlu and Oghay Saeed Nasiri, and special thanks to Mazhar Kazmi for all the way moderating. My question is from education side. Is there any possibility or opportunity can we go for the student exchange program in some Iranian universities, especially as Iran is good in cyber security? So we would love to go for the MOU signing in student exchange program and credit or transfer program with Iranian universities. Yeah, we have a bilateral agreement. I think before it's come back to maybe I'm not sure. 40 years ago, you have a agreement in the education in the I think between the Tehran University and Lahore University. But if you want, yes, Iranian University is ready to have agreement with you. And if you want, you propose your write your proposal and send me. I send to the Tehran, and one of my colleagues in embassy is in charge of the diplomatic cultural diplomatic. I ask her
to join you to one of the Iranian, especially in Tehran or other province, every university you want. Yeah, it's ready. Yeah. Thank you very much. Now I would like to introduce you with my friend, my brother, my colleague Afaqiyu, his senior vice president. I would like him to ask you to answer the question and then he will complete the session. And, officially Mr. Ayub. thank you very much. Yeah. Shukran, Mr. Sadar, Janab Sadar, for this introduction. Having a question regarding the exchange rate, two different exchange rates in Iran going on, according to my knowledge. अगर इनको समझ नहीं आएगा, you please इनको समझा दीजिएगा. मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ईरान में इस वक्त दो एक्सचेंज रेट्स चल रहे हैं. It's a different exchange rates for an importer and for the exporter. अगर ये बात सही है, तो how the state bank or the regulating authority in Iran is managing this? सवाल में कौन है कि दो तबादले फूल हस दर ईरान, एक दौलती हस व एक बाजार आज़ाद है, यानी वो हर दो तफावत दारी जजूरी बैंक के मरकजी ईरान इराक यानी इंतज़ामी कोने जजूरी मैनेजमेंट. این رو بهشون فارسی میگم بهشون بگید. ما میگیم ارز دو نرخی، یعنی ارزی که دو تا نرخ داره، یه نرخ دولتی داره یه نرخ چیز داره. ما تقریبا 3-4 سال پیش یک نرخ داشتیم، تک نرخی بود، ولی بعد از اینکه حالا تحریم‌های آمریکا اومد، به خاطر اینکه به یک سری از کالاها باید یارانه تعلق بگیره، این اتفاق افتاد که دولت میاد فقط به اون پروداکتس هایی که اساسی هستن، مثل برنج، مثل چیزهایی که این هستش، پول 4000 تومان بهش اختصاص میده. بقیه افراد باید خودگاز هست. این فقط برای یارانه ها هست که دولت کمک کنه که اقتصاد بچرخه. अच्छा ये फरमा रहे हैं कि दो तरह के नर्ख गवर्नमेंट ने चल रहे हैं, दो तरह के चल रहे हैं. अच्छा वो कैसे करते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं, मतलब चावल उनके लिए लाजम है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके लिए वो ईरान की तुजार को कहते हैं कि आप बैंक में 4200 तुमान जमा कराएं, हम आपको उसके बदले में $1 दे दें.